Believe you can, and you're halfway there. As you all know, midterm exams are just around corner. Exam time is considered to be stressful time for every student. But don't you worry, we here to help you all. Very good morning, everyone. My name is Nakshita, and today I welcome you all in today's assembly. Let's start our day with prayer. So for this, I would like to call Sanvi and Shivan. Thank you, Sanvi and Shivansh. Thought. A new day begins with a new thought. So, the same I would like to call Kanishka. Thank you, Anshulati. Good morning, all of you. My name is Kanishka from class 2nd C. The thought of the day is, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. I repeat my thought. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Thank you. Have a good day. Thank you, Kanishka, for such an inspiring thought. Poem. Winners never quit and quitters never win. With this quote, I would like to call Chirag for beautiful poem. सुप्रभात सभी को। मेरा नाम चिराग साधवान है। मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेके चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेके चलती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। ज्यादातर खाली हाथ लौट कर आता है, ज्यादातर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में,
मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती से स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती से स्वीकार करो। जब क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बाय श्री हरिवंश राय बच्चन। थैंक यू। Thank you, Chirag, for an inspiring poem. Act. It's not about how bad you want it. It's about how hard you are willing to work for it. With these lines, I would like to call Kanak with her mother for play. खनक उठो बेटा, कितनी देर तक सोते रहते हो? मैं अभी उठती हूँ, थोड़ा और सोने दो। सुबह जल्दी उठकर थोड़ा पढ़ लिया करो, क्योंकि अब तुम्हारे मिड टर्म एग्जाम शुरू होने वाले हैं। केवल एक सप्ताह ही बाकी है। हाँ, मिड टर्म एग्जाम ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इसके लिए कोई खास पढ़ने की जरूरत नहीं होती। ऑनलाइन एग्जाम में तो केवल टिक ही लगाना होता है, वो तो मैं चुटकी बजा के कर लूंगी। नहीं बेटा, उस दिन मैंने सुना था आपकी टीचर बता रही थी कि इस बार आपका सब्जेक्टिव एग्जाम भी होगा, जिसमें बुक एक्सरसाइज और चैप्टर के बीच बीच में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेटा, सफलता केवल कड़ी मेहनत करने वालों को ही मिलती है। सफलता कभी भी एक दिन में हासिल नहीं की जा सकती। हमें अपनी ईमानदारी और क्षमता के अनुसार रोज मेहनत करनी चाहिए। माँ, वास्तव में आप मेरी सच्ची मार्गदर्शक हो। अब से मैं आपकी सारी बात फॉलो करूंगी। थैंक यू। Now I would like to call Ms. Shilpa Rani for some tips on online exams. Respected Principal Sir, Headmisters Ma'am, teachers and dear students. As you all know, your midterm exams are approaching and they will be conducted online. So, I Shilpa Rani is here to give you some tips related to your midterm exams. Listen to them very carefully as they will help you in performing better in your midterm exams. So, let's start. First of all, choose the location with good internet connection so that there will be no problem due to network connectivity. Find the best spot with minimal distraction. Make sure your device, that is phone, laptop or tablet, is fully charged. Read and understand all the instructions carefully. Check the date and time properly. Study your class material. Log in at proper time. Utilize your time wisely. Know your test format, that is subjective or objective, and plan your time accordingly. Don't panic in case of any technical issue. Don't leave the test page. Take screenshots of the answer and send it to your teacher. Last but the most important, check your answer before you submit the test. I hope you all will follow these instructions and will perform best in your exam. All the best for your exams. Thank you so much, Kanak, and to our mother for telling us importance of exams. So, secondly, I want to thank Shilpa ma'am for giving us such useful tips on online exams. Thank you everyone. Have a nice day.